Installing WDS, Window Deployment Services. In DC machine, we will install WDS. Click on Add Roles and Features. Next. Again next. Do press next. Now you have to add the service, Window Deployment Services. You have to click on that, then add features. Next, next, next. Click on install. Now you have to click on close because it is installed. 100% showing. Now go to tools. Click Window Deployment Service. This is our server. Expand the server. Now you can see your system name. Expand the system name. Right click on system name and first option configure server. Next, 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 yes, next. ये सर्वर हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है, तो उसके बाद हम फिनिश पर क्लिक करेंगे। जो हमने विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विस को डाउनलोड किया है उसको हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। इंस्टॉल करा था, अब कॉन्फ़िगर कर लिया है। उसके बाद अब हम अपने सिस्टम नेम पर राइट क्लिक करेंगे, ऑल टास्क रीस्टार्ट। सारे टास्क को रीस्टार्ट कर देंगे क्योंकि अब हमारा ये जो WDS सर्वर है वो कॉन्फ़िगर हो गया है। सारे टास्क को हम रीस्टार्ट कर देंगे। सक्सेसफुली हो गया है। क्लिक ऑन ओके।